All right, so let's start our lecture with real numbers and number line, and let's see कि different arithmetic operations करने से number line पे क्या trends होते हैं and how we can use those to solve GRE questions. So let's start with a very simple definition of real numbers. जब भी GRE पे आए कि let's say x is a number, तो GRE would basically be saying कि x is a real number. रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो टैंजिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ हेयर ऑन योर हेड, द हाइट ऑफ द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू और टुवर्ड्स योर राइट साइड, द नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द रूम दैट यू आर सिटिंग इन राइट नाउ. तो रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शंस सारे नंबर्स आते होते हैं. रियल नंबर्स को समझने का एक और बेहतर तरीका ये है कि यू आस्क योरसेल्फ कि वो कौन से नंबर्स होंगे जो कि रियल नहीं होंगे. उसके लिए आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 का स्क्वायर करो और -2 का स्क्वायर करो और पिक एनी अदर नंबर दैट यू वांट. यू वुड फाइंड आउट कि स्क्वेयरिंग एनी नंबर गिव्स यू अ पॉजिटिव आंसर. सो वो नंबर्स जिनको स्क्वायर करके नेगेटिव आंसर्स आते हैं उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं. दे ओनली एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन. I'm sure you must have studied iota at some point. The good news is that those numbers do not appear on the GRE. और रियल नंबर्स को शो करने के लिए नंबर लाइन होती है. नंबर लाइन पे सिर्फ एक ट्रेंड है एंड दैट ट्रेंड इज कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट पे जाते हो तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं. I mean, I do not know what A is or what B is or what C is, but if I give it few numbers, maybe 1, 2, 3, -3, 0, 2, -1, -3, -4, तो I would realize कि जितने numbers right पे आ रहे हैं वो left वाले numbers से बड़े हैं. And that's the only trend that you will see on the number line. Alright, so हमें एक number line दी हुई है. नंबर लाइन पे A मार्क्ड है और B मार्क्ड है. वी कैन सी के B जो है वो A के राइट साइड पे है. तो मे बी वी कैन राइट डाउन कि B इज फॉर श्योर ग्रेटर देन A, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम बोथ साइड्स we get this, right? So your answer has to be this. Another way of doing it could be कि आप ये reasoning use करो, you know, your that 6th grade reasoning के बड़े नंबर में से which in this case is B, अगर आप कोई छोटा नंबर subtract करते हो which in this case is A, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, right? And again you can pick B minus A is greater than 0 that way as well. एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि GRE के ऊपर एक्चुअल नंबर्स यूज करने से परहेज कीजिए. फॉर एग्जांपल यू कैन से कि A1 है, B2 है. You could have said कि A maybe -10 है, B3 है, right? You would have reached the same conclusion, but you would have ended up spending a lot more time. और lastly ये होता है कि when you're using numbers तो हमेशा बंदे के बैक ऑफ द हेड पे कंफ्यूजन रहती है कि शायद कोई और नंबर यूज कर लेते तो कोई डिफरेंट आंसर आ जाता. और वो जो कंफ्यूजन होती है ना, दैट रियली plays a negative role on your test, right? So for the next question, try to come up with the logic and try to answer the rest of questions based upon a logic.
So this is a quantitative comparison का question. Quantitative comparison के जो questions हैं, they are the most abundant question types on the GRE. तकरीबन 30 से 35% जो मैथ में क्वेश्चंस आते हैं GRE पे वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के होते हैं. दो क्वांटिटीज दी हुई होती हैं और आपसे पूछा होता है कि क्वांटिटी A बड़ी है या B बड़ी है या दोनों इक्वल हैं या आप नहीं बता सकते. राइट. सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नंबर लाइन दी हुई है जिस पे A के राइट साइड पे B है, जिसका मतलब है कि A B से छोटा होगा, और B के राइट साइड पे C है, which means that C is bigger than both A and B. One way of doing it, and then I'm just doing it to make you guys understand the question. One way of doing it could be कि आप A को, B को और C को कोई वैल्यू दे दो. I mean अगर हम इस तरह से करते हैं तो C minus B क्या आता है? 1 आ जाता है. B minus A भी 1 आ जाता है. Someone might say कि both quantities are equal. But what if A is 0, B is 2 and C is 10, right? फिर C minus B जो है that will give you 8 and B minus A will give you 2. So in that case quantity A बड़ी आ रही है. तो इस तरह से अगर दो contradicting cases आ जाएं, that should be enough to tell you that the relationship cannot be determined. Again, if I were you to use some logic to solve this question, what I would do is कि let's think about it. So C minus B should give you the distance between C and B. अगर B 2 है, C 3 है, तो C minus B will give you 1, which is the distance between 2 and 3. And B minus A similarly would give you this distance. Both quantities are positive, obviously. And I think that's the trap in this question कि ये जो distance है ये equal लगता है. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि A, B और C के दरमियान में जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं, सो हम अस्यूम नहीं कर सकते डाटा. जस्ट लेट मी राइट दैट डाउन कि GRE के क्वेश्चंस पे टू नॉट assume data, right? So the correct answer for this question is D, that the relationship cannot be determined from the information that has been given. So we have another quantitative comparison का question. इसमें भी आपको number line दी हुई है, उसके ऊपर A, B और C marked हैं. Again, A is on the left side of B and both A and B are on the left side of C. So I can say कि A is less than B and B is less than C, right? Now let's look at the quantities. Quantity A is C minus A. So it's basically a बड़ा number में से subtracting a छोटा number. It has to be positive. And quantity B is B minus A. So again, a bada number minus a chota number, it has to be positive as well. So what do I do now? So C minus A will give me this much distance. And B minus A will give me this much distance, right? And one thing I know for sure is कि C जो है वो B के right side पे है. तो A से अब ज़रूरी नहीं है कि B और C में बहुत ज़्यादा गैप हो. ये भी हो सकता है कि B 2 हो और C 2.0001 और $1,000,001 for that matter हो. But what I know for sure is कि B के right side पे है C, right? So A से जो B का distance है और जो A से C का distance है उसमें फ़र्क होगा. और A से C का distance जो है, just because C is on the right side of B, it is going to be greater. So that makes quantity A bigger than quantity B. So A is your correct answer.
अच्छा, इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो वही है जो बेसिकली लास्ट दो क्वेश्चंस में था। इसमें भी ए बी सी है, इस तरह से कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। क्वांटिटी ए आपको दी हुई है बी माइनस सी, विच इज एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना, राइट? छोटे नंबर में से एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। सो दैट हैज टू बी नेगेटिव, right? You can take examples, numbers key. Again, I would not recommend that, but if you have trouble understanding these questions, you can pause the video and try some examples. And b minus a is basically एक बड़ा number minus a छोटा number, so that has to be positive. And I think we do not need to solve it any further because anything positive is going to be bigger than anything negative. And so for that reason, quantity b is bigger. All right, so let's look at some basic definitions, and the reason why I want you to revise these definitions is because GRE के questions में अक्सर इन definitions का use होगा. For example, if a question says that x is an integer और आपके x के दो answers आ रहे हैं, एक 10.1 और दूसरा 15, और options के अंदर दोनों लिखे हुए, you might end up picking both, not keeping in mind that the question said that x is an integer, so it cannot be a point wala number, right? So integers जो हैं, they are basically round numbers जिसमें positives भी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, negatives भी आते हैं -1 and on the left side of the number line, और 0 भी आते हैं. The only condition for integers is that they have to be round numbers, वो points में नहीं हो सकते. नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ये भी राउंड नंबर्स हैं बट दे स्टार्ट फ्रॉम 1. होल नंबर्स जो हैं, दे आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स प्लस 0, राइट? एंड रियल नंबर्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इट्स एवरी टेंजिबल नंबर which include positive numbers, negative numbers and fractions. And one thing that I think I missed before was that you can basically represent any real number on the number line. My question from you guys is, what do you think? Is 0 positive or not? If your answer is that 0 is neither positive nor negative, you're right. क्योंकि 0 अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो मिडल में होता है, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव है और उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट? सो 0, अगर फॉर एग्जांपल अगर जीआरई का कोई क्वेश्चन कह रहा है कि x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो x की एक पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है बिकॉज 0 इज टेक्निकली नॉन नेगेटिव. इसी तरह अगर the question is saying that x is a non-positive integer, 0 can again be entertained because again 0 is a non-positive integer. So 0 is neutral. All right, so assuming that the number line shown has equal spaces, what's A? So हमने assume करना है, हमें क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है कि आप ये assume करो कि जो नंबर लाइन नीचे दी गई है इसके अंदर जो स्पेसेस हैं वो इक्वल हैं. अब किन स्पेसेस को कह रहे हैं उसकी डायरेक्ट कॉन्नोटेशन यही है कि ये जो दो मार्किंग्स हैं कंसेक्यूटिव, इनकी बात की जा रही है, राइट? सो अगर इनके स्पेसेस इक्वल हैं तो दैट वुड मीन कि
I mean, अगर इस स्पेस को मैं S कहता हूँ तो this would be S, 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 and this would be S as well. आपसे सवाल में A की वैल्यू मांगी गई है. How can we do that? I mean, दो नंबर्स तो हमें बताए हुए हैं. एंड आई थिंक कि अगर आप 1/4 में एक दो तीन दफ़ा S को ऐड करो यू विल गेट A. इट्स द सेम एज इफ़ यू नो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और इसी तरह कंटिन्यू कर रहा है तो यू वुड ईजिली से कि अगला नंबर जो है वो 4 होगा और से अगला नंबर 5 होगा और से अगला नंबर 6 होगा, राइट? बिकॉज यू नो कि जो स्पेस है वो 1 का है. तो आई थिंक द trick in this question is कि आप उस space को find out करो. Let's see how we can do that. So if we subtract 1/4 में से -22/7, that should give us this much distance, right? So let's just calculate that quickly. So it should be 1/4 plus 22/7 with an LCM of 28. यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा. ये क्या बनता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 95/28 is the distance between -22/7 and 1/4. और furthermore ये distance जो है 1, 2, 3, 4, 5 bits में बटा हुआ है, right? So if I have to calculate that one bit, what I can do is I can divide this 95/28 with 5, right, to get the length for that one bit. And if I do that, what do I get? 5 1s are 5, 6 7 8 9, 5 9s are 45. तो एक bit जो है वो 19/28 का है. और अगर मैं 1/4 में 1 2 3 times इस 19/28 को ऐड करूं, I will get A. Let's just quickly find out what A is. The LCM here should be 28, 7, 57. That gives you 14, 64/28, 1, 6, and 7. So A is 16/7. इसकी डिफरेंट अप्रोचेस और भी हो सकती हैं. आप कोई इसको यूं भी देख सकता है कि आप डायरेक्टली 1/4 में से -22/7 सब्ट्रैक्ट करो, उसको वहीं पे 5 से डिवाइड कर दो और फिर उसको 3 टाइम करके 1/4 में ऐड कर दो. बट वट एवर यू डू, the end goal is to get the answer, which is 16/7. And one thing that I would like to mention here is कि GRE के अंदर calculations कभी लंबी नहीं होती हैं. तो आप लोगों को I would recommend कि अपना mental math sharpen करो. So while you are taking this course, I would want you to assume that calculators are completely not allowed, right? It will help you to find the shortest and the fastest way on GRE questions. So if you guys picked none, you're wrong.
and I'll tell you why. So let's just start by reading the question. Question कह रहा है कि A, B and C all lie on a number line. Okay. AB has a length of 15. Let's take some visual aid and draw it. A से B की जो length है वो 15 है. And then it says that B to C has a length of 17. So B से C तक जो length है वो 17 है. Right? I mean, हमने question कहीं से start करना होता है, तो let's just start with this. Point U is the midpoint of AC. तो A से C का distance क्या बनता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 3, 32. तो U जो है that has to be B के थोड़ा सा right side पे 16 और 16 के distance पे. And you might say कि यार U से C की length तो 16 है and 16 is nowhere to be seen in the options, so it's none, which is wrong, because what you're doing is you are not thinking outside of the box. You are not entertaining all the possibilities. I mean, just because ABC के अंदर alphabetic order ये है कि A के बाद B और B के बाद C और C के बाद D आता है, does not mean कि इस number line पे भी ये 3 points इसी order में होंगे. अगर आप B से C का distance देखते हो तो वो 17 है, जो कि A से B के distance से ज़्यादा है, right? तो मैं इस C को rotate करके इसको ज़रा visualize करो, यहाँ पे भी तो ला सकता हूँ. I mean, let me draw it. C A B, यानी कि अभी भी A और B का distance 15 हो और C से B का distance 17 हो, यानी कि ये distance 2 हो जाएगा. अभी भी अगर आप देखो तो C से B तक का total distance 17 है, A से B तक का distance 15 है. यही क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है. और U is the midpoint of AC, so U has to be in the middle of A and C, which makes the distance from A to U and U to C 1. And they have asked you about the distance from U to C, so that's 1. Now someone might argue कि इसमें तो हम assert कर रहे हैं कि ये 1 होगा. And the answer to that is कि GRE के questions basically are testing your analytical skills, कि how well you can delineate the different possibilities, right? So by picking 1, you're basically saying that you identify that 1 is one of the possibilities. Someone else might say कि यार इसके अलावा भी configurations हो सकती हैं, CBA भी हो सकता है. But if you draw that, you would realize that CBA is basically looking at this number line from behind, and BAC is looking at this number line from behind.
All right, so I hope you did not have an easy time solving this question, and I plan to undo that for you. So क्वेश्चन आपको ऑर्डर कर रहा है कि आपने डिसाइड करना है वेदर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट कुड और कैन नॉट बी ट्रू। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हर हाल में ठीक होंगी वेदर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द एक्चुअल वैल्यूज आर, विच कुड बी ट्रू यानी कि जो ठीक हो सकती हैं या शायद ना भी हों, राइट मतलब दोनों सिनेरियोज बन सकते हैं, और दोज विच कैन नॉट एवर बी ट्रू यानी कि जो हर सूरत में गलत ही होंगी। आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, उसके ऊपर मार्किंग स्कीम है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि e प्लस b इज ग्रेटर देन 0। सो लेट्स स्टार्ट बाय लोकेटिंग e एंड b। सो e यहाँ पे है, b यहाँ पे है। अगर हम e को देखें तो e इज समथिंग ग्रेटर देन 1, यानी कि e हो सकता है 1.01, 2, 3 एंड सो ऑन। और उसको आप ऐड कर रहे हो b में जो कि -1 और 0 के दरमियान में, बेसिकली एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो हाउ डू आई राइट इट? आई कैन से कि ये हो सकता है -0.1, -0.2 ऑल द वे अप टू something like -0.99 approaching -1, right? अब इस केस में आई थिंक इट्स एविडेंट कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज इफ यू लुक एट इट तो एक ग्रेटर देन 1 चीज है, राइट right? और उसमें से टेक्निकली, क्योंकि कीप इन माइंड जब आप कोई चीज नेगेटिव ऐड कर रहे होते हो तो इट्स द सेम एज सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, राइट? तो अगर मैं लेट्स से ई जो ग्रेटर देन 1 है वो 1.1 है, उसमें ऐड कर रहा हूं -0.1, तो दैट्स द सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 0.1 फ्रॉम दैट 1.1, राइट? तो इन शॉर्ट एक बड़ी चीज में से एक छोटी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, the answer is always going to be positive, so it's a must, it must be true। B के अंदर A B के प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि वो ग्रेटर देन D होगा, must it be true, could it be true, or can it never be true? Let's see, let's locate A and B first। so यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे D है। so A is something less than -1, right? so A could be, अगर मैं A B के प्रोडक्ट को इस तरह से लिखता हूँ, greater than D, or D is between, okay let me write D here actually। so I can say कि A can be something like -1.1, -2 and so on। B could be something like -0.1, नेगेटिव फ्रैक्शंस में से कुछ भी हो सकता है 0 और -1 के दरमियान। और D जो है वो भी एक फ्रैक्शन है, इट्स अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सो इट कुड बी समथिंग लाइक 0.1 up till 0.99 or 999 for that matter। मेरे ज़हन में जो आ रहा है, we could do it by going against my own advice, but I will give you some multiplicative trends which will make it easier for you to come up with a logic। But until then, let's just pick numbers। A को, let's say A को मैं कह देता हूँ -2 और B को मैं कह देता हूँ -0.1, right? अब इनका प्रोडक्ट क्या आता है? इनका प्रोडक्ट आता है 0.2। अब D क्या हो सकता है? अब D जो है वो 0.1 भी हो सकता है, जिस केस में ये ट्रू नहीं होगा। D जो है सॉरी ट्रू होगा बिकॉज 0.2 इज ग्रेटर देन 0.1, एंड D कुड बी 0.99 एज वेल, राइट? क्योंकि D की हमें वैल्यू नहीं बताई ना, सिर्फ 0 और 1 के दरमियान है C के राइट साइड पे। तो यहीं से पता चल जाता है कि एक सिनेरियो में ये ट्रू आ रहा है और एक सिनेरियो में ट्रू नहीं आ रहा। So there is a possibility that this could be true, but we cannot assert that this option will always be true. And so for that reason, I would say that it's a case where it could be true। C में E minus B, let's locate E and B। So यहाँ पे E है, यहाँ पे B है। Sorry, it's E minus A is greater than C minus B। So यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे E, यहाँ पे A। So E is something greater than 1, उसमें से subtract हो रहा है A, which I already explained is the same as adding a fraction less than 1। Will it be greater than C minus B? C is a fraction less than 1,
उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना is the same as adding something less than 1. Does it tell me anything? Okay, let's take a different approach. So e minus a will give me this much distance, and c minus b will give me this much distance. Okay, fine. It's a must. It's a must क्योंकि e c के राइट साइड पे है और a जो है वो b के लेफ्ट साइड पे है. तो e और a के दरमियान में जो डिस्टेंस है, regardless of what their actual values are, वो हमेशा c और b के दरमियान वाले डिस्टेंस से, जो कि c माइनस b से आएगा, उससे बड़ा होगा. सो इट्स अ मस्ट. डेल्टा कह रहा है कि d माइनस b इज इक्वल टू 2. ओके, d माइनस b इज इक्वल टू 2. यहाँ पे d है, यहाँ पे b है. d इज समथिंग लेस देन 1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है एक नेगेटिव फ्रैक्शन, which again is the same as adding something. And what is that something? That's a fraction, so it is less than 1. So दो less than 1 चीजें अगर add हो रही हैं तो answer is always going to be less than 2, so it cannot be true. Option E कह रहा है कि minus b बड़ा है ed से. Minus b, okay, there's b, there's e, there's d. So b जो है it's a negative fraction. Minus multiply करने से it will become a positive fraction. So minus b is greater than ed would look something like minus b के साइड पे हो सकता है 0.1 all the way up to 0.999 something is greater than ed. Ed को let's say e is 2, which it can be, and let's say d is 0.5, which it can be. 2 into 0.5 will give you 1. Is this side greater than that side? It's not, but let's see if it can be. Let's see if we can make minus b greater than ed. Can we do that? Let's say कि b जो है वो 0.999 है, मतलब मैं अब लेफ्ट साइड को बड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ और राइट साइड को छोटा करता हूँ. e को मैं कह देता हूँ कि वो 1.1 है, d जो है वो 0.1 है, 0.1. Well, yeah, in this case, it's pretty evident that 0.999 will be greater than the product of 0.1 and 1.1, which is 0.11. So it could be true, but we cannot say if it must be true, right? Must की category से निकल जाता है. All right, so let's sprint through some more definitions. Factors वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं. जैसे 2 6 का फैक्टर है क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है. इसी तरह 2 10 का भी फैक्टर है, 20 का भी फैक्टर है, 22 का भी फैक्टर है, 30 का भी फैक्टर है, एटसेट्रा. मल्टीपल्स इसका ऑपोजिट होते हैं. जैसे 2 6 को डिवाइड करता है और उसका फैक्टर है, उसी तरह 6 2 से डिवाइड होता है और उसका मल्टीपल है, राइट? सो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. Factorization is the process of breaking down a number into its multiples. For example, if you have 100 को मैं 10 क्रॉस 10 लिख सकता हूँ, 10 को मैं फर्दर 2 क्रॉस 5 लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस 5 लिख सकता हूँ, और इससे आगे क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मैंने इसको प्राइम नंबर्स तक डिवाइड कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है, तो इस लेवल तक की फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. Which brings me to the definition of prime numbers. Prime numbers basically वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद. जैसे 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, and so on. इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है. द आंसर टू दैट इज नो, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है. क्या नेगेटिव नंबर्स प्राइम हो सकते हैं या नहीं? द आंसर टू दैट इज अगेन अ नो. नेगेटिव प्राइम नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स को प्राइम नंबर्स में क्लासिफाई नहीं किया जाता. प्राइम नंबर्स इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन फॉर non-negative numbers, non-negative integers to be precise. Coming to the multiplication वाले trends number line के ऊपर which I mentioned earlier. So note कीजिए कि let's say यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और एक नंबर 1 के बाद है a और एक और नंबर है b. अगर दो नंबर्स जो 1 के बाद उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कहां पे आता है? इफ योर गेस वाज कि बड़े नंबर से भी बड़ा आता है तो यूर राइट.
फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 को अगर आप देखो तो बेसिकली 3 का डबल हो रहा है, राइट? बड़े नंबर का डबल हो रहा है, या आप कह सकते हो छोटे नंबर का ट्रिपल हो रहा है। आंसर 6 आ रहा है जो कि 3 से भी बड़ा है, राइट? सो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो बड़े नंबर से भी आगे लाई करेगा। इसको आप यूं विजुलाइज कर सकते हो कि 1 से बड़े जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर लाइन के ऊपर प्रोडक्ट को राइट साइड की तरफ खींच रहे होते हैं, मैग्नीफाई कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर एक नंबर 1 के बाद है x और एक नंबर 0 1 के दरमियान में है y, तो अब वो जो x वाला नंबर है वो प्रोडक्ट को उधर लेके जा रहा है। जो y है, बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, तो वो छोटा कर रहा है। तो होता ये है कि इनके दरमियान का जो रीजन है वहां पे कहीं भी आ, ये आंसर लाई करेगा आपका, राइट? लास्टली, यूजिंग दैट सेम लॉजिक, द सेम ट्रेंड, वी कैन से कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 0.2, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो 0.02 आंसर आता है, जो कि छोटी वाली फ्रैक्शन 0.1 से भी छोटा है। तो अगर दो फ्रैक्शंस इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो छोटी वाली फ्रैक्शन है उससे भी कम आता है। अब जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो प्रोडक्ट तभी होता है जब दोनों नंबर में से एक जीरो, राइट? सो जीरो और छोटी वाली फ्रैक्शन के दरमियान में कोई नंबर होगा। सो ए बी का प्रोडक्ट जो है वो जीरो से ए के दरमियान में लाई करेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट क्वेश्चन पे दोबारा जाएं और जहां पे मल्टीप्लिकेटिव ट्रेंड्स यूज हो रहे हैं इनको यूज करें टू बॉल्स्टर दीज। So I think instead of using numbers for this question, हम उन्हीं ट्रेंड्स को यूज करके इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आप सी और डी के प्रोडक्ट को देखते हो, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो यानी कि दोनों फ्रैक्शंस हैं 0 1 के दरमियान में। अब विदाउट यूजिंग एनी एग्जांपल्स, without assuming any logical number for these, you can simply say क्योंकि ये fractions हैं दोनों, तो जो छोटी fraction है उससे भी कम होगा। So C और D का product जो है वो zero और C के दरमियान में कहीं होगा। Looking at E and F, तो E यहाँ पे है 0 और 1 के दरमियान में, so it's a fraction। F जो है वो 1 से बड़ा है, so F would be pulling the product towards the right side of number line, E would be pulling the product towards the left side, and so the product would settle somewhere in between these two extremes, E और F के। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो, E को 0.5 कह दो, F को 2 कह दो, तो 1 आंसर आता है। 2 से बड़ा करो, 100 करो तो 1 के आगे भी आ जाएगा। F को आप 1.1 कर दो तो 1 के लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा E और F के दरमियान में रहेगा। कमिंग टू A एंड B, ए भी 1 से बड़ा है, बी भी 1 से बड़ा है, तो या फॉर श्योर ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो बी से भी बड़ा होगा।
I would say this is one of the hard questions on the GRE, but I'll try to make it as easy for you guys as possible. So first product जो है वो A और C का मांगा हुआ है. A यहाँ पे है, C यहाँ पे है. And so if we think about A could be something like 0.1 with a negative sign, minus 0.2, all the way up to negative 0.999. C 1 के बाद में है, तो C would be something like 1.1 all the way up to 100 and beyond. अब इसमें कंफ्यूजन, अगर तो मुझे सिर्फ फ्रैक्शन दी हुई होती और वो एक 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फिर तो मैंने बहुत इजीली बता देना था कि उस फ्रैक्शन और उस नंबर के दरमियान में ही कहीं आएगा. The problem here, I think, is the negative sign, right? So let's just deal with the problem first. Let's say A is negative 0.5 and C is 10. And let's for a moment take this negative sign outside of the bracket. अगर 0.5 और 10 मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं बहुत इजीली कह सकता था कि 0.5 और 10 के दरमियान में कहीं आंसर आएगा, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक फ्रैक्शन एक ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉसिबिलिटी जो है ऑफ द आंसर वो उन दोनों के दरमियान में कहीं रहेगा. अभी भी ऐसा ही है. द ओनली चेंज इज कि एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जो रेम ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर्स जो है वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर पहले 0.5 से 10 तक आना था तो अब नेगेटिव 0.5 से नेगेटिव 10 के दरमियान में कहीं आंसर आएगा, राइट? एंड इफ यू लुक एट द ओरिजिनल नंबर्स, हमने a को नेगेटिव 0.5 बोला था, राइट? सो देयर्स a, और c को हमने 10 बोला था, तो यानी कि -10 वुड बी -c, सो देयर्स -c. सो a c का प्रोडक्ट जो है वो -c और a के दरमियान में कहीं लाया करेगा. Again, if you find these questions tricky और अगर कोई बात समझ नहीं आती है, तो just keep in mind that enrolling in this course gives you access to unlimited query classes live with me, where I can address all your confusions. Coming to the second product of A and B. So if you look at A, it's a negative fraction and B is a positive fraction, right? So we have a negative fraction and we have a positive fraction. All right. Again, the problem is the negative का sign. Negative sign को बाहर ले जाते हैं, तो it's a fraction with another fraction. Now we have to decide कि इनमें से छोटी कौन सी है अगर हम negative को बाहर ले जाते हैं. ये originally A था और ये originally B था, ये अभी भी B है. सिर्फ A में से हमने एक नेगेटिव साइन बाहर ले गए तो ये -a हो जाएगा और ये B हो जाएगा. नाउ लेट्स सी कि -a कहाँ पे आता है. सो A जो है वो -b के इस साइड पे है, तो नेगेटिव ऑफ A वुड बी पॉजिटिव और वो B से पीछे होगा. यप, आई मीन लाइक A could be -0.1 and -b could be -0.5, क्योंकि रिलेटिव इनकी पोजीशनिंग तो हमें बताई हुई है. सो इस केस के अंदर जो छोटी फ्रैक्शन है वो -a बन रही है, राइट? और जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जीरो से छोटी फ्रैक्शन के दरमियान में कहीं आंसर आता है, राइट? सो इस केस में जीरो से -a के दरमियान में कहीं आंसर आएगा. बट लेट्स नॉट फॉरगेट द माइनस का साइन विच वी कैरिड आउट. और ये जो रेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है बिटवीन जीरो एंड -a, अब सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि वो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो सारे की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा. So now it will become a से 0 तक, right? If I multiply this negative with the possible answers. So let's look at a to 0. There's a to 0. तो आपका a b का प्रोडक्ट जो है वो a और 0 के दरमियान में होगा.
It says that in the number line shown below, the tick marks are equally spaced. Which of the following about the numbers A, B, and C must be true? So you have to pick only the options जहाँ पे आप sure हो कि वो हर हाल में true होंगी. Let's just start with the first piece of information which says कि in the number line shown below the tick marks are equally spaced. यानी कि दो markings जो हैं उनके दरमियान में space consecutive है. यानी कि A और 0 के दरमियान में space को अगर मैं S कहता हूँ तो वही इधर होगा वही इधर होगा, right? And what does that make B? That would make B 0 plus S, S. That would make C 0 plus 2S, 2S. And that would make A 0 minus S, to minus S, right? Now let's look at the options. तो option A कह रहा है कि A, B और C का product less than 0 होगा. A is negative, B is positive, C is positive. तो yeah, I mean product के अंदर एक negative आ रहा है, दो positive आ रहे हैं, तो product overall negative हो जाएगा. It's a must. A plus C will be equal to B. A plus C will be equal to B. It will be. I mean S की जो भी वैल्यू है 1 है 2 है 10 है 0.1 है, regardless of those values A और C का product जो है वो B के equal ही आ रहा है. B minus A will give you the distance between B and A, which has to be positive. That multiplied with C, which is another positive number, will always give you positive, so it's correct. A minus B is a chota number minus a bada number, which has to be negative. And उसको फिर A से multiply कर रहे हो तो फिर negative number से multiply कर रहे हो, that has to be positive, it's a must. A minus B is greater than 0. A is a chota number, B is a bada number. As I explained, D, it has to be negative, so no. So A, B, C, and D must be true.